भारत के लोकतंत्र के लिए मार्च 2025 के पहले 10 दिन बेहद अहम होने जा रहे हैं। ये वह समय होगा जब देश की न्यायपालिका, राजनीति और चुनाव प्रणाली से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले आने वाले हैं। इन मामलों में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के बयान की सुनवाई होगी, दूसरी तरफ ईवीएम की विश्वसनीयता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। इसके अलावा सीईसी की नियुक्ति से जुड़े विवाद और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ और रणबीर अलाहाबादिया से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई भी होनी है। इन 10 दिनों में देश की राजनीति और लोकतंत्र की दिशा तय होगी। सवाल ये है कि क्या भारत का लोकतंत्र इन चुनौतियों से पार पा सकेगा या फिर ये समय भारतीय न्यायपालिका और राजनीति के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा। अमित शाह के बयान पर सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जो विवादों में आ गया। उनके इस बयान को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसमें ये दावा किया गया कि अमित शाह का ये बयान लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। सुनवाई में अहम सवाल क्या उठते हैं? पहला सवाल ये उठता है, क्या अमित शाह का बयान संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाता है? दूसरा, क्या ये बयान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है? और तीसरा, अगर कोर्ट इस बयान पर सख्त फैसला लेता है तो क्या अमित शाह को पद छोड़ना पड़ेगा? बड़ा सवाल है और गंभीर भी। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे सबसे ताकतवर नेता से जुड़ा है। अगर अदालत कड़ा रुख अपनाती है तो ये एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जो कि 3 मार्च 2025 में होने जा रही है। देश में ईवीएम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है और इससे चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं और पहले भी हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 मार्च को सुनवाई तय की है। इस सुनवाई में 3 बड़े मुद्दे होंगे। पहला, क्या ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, सिक्योर है? दूसरा, क्या चुनाव आयोग को वीवीपीएटी की संख्या बढ़ानी चाहिए? तीसरा, क्या बैलेट पेपर पर लौटने की ज़रूरत है? अगर अदालत ईवीएम के खिलाफ फैसला सुनाती है तो 2025 के चुनावों पर सीधा असर पड़ सकता है। क्या मोदी सरकार इस संकट से उभर पाएगी? होली के बाद सीईसी का विवाद। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी की नियुक्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है। सरकार पर आरोप है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं रहने दिया जा रहा है और ये संस्था केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। होली के बाद इस मामले में सुनवाई होगी, जिसमें 2 अहम बिंदु उठाए जाएंगे। पहला बिंदु ये होगा, क्या सीईसी की नियुक्ति में सरकार की मनमानी चल रही है? दूसरा बिंदु, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है या फिर सरकार के इशारे पर फैसले ले रहा है? अगर कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये सुनवाई मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। रणबीर अलाहाबादिया से जुड़ा मामला भी अदालत में आने वाला है। सवाल ये है कि क्या देश का मुख्य न्यायाधीश अपने बेटे के करियर को प्रभावित कर सकता है? इस मामले में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं। अगर अदालत ने इसे गंभीर माना तो ये भारत की न्यायपालिका के इतिहास में सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। अभिनव चंद्रचूड़ का मामला क्या है, ये भी जान लेते हैं। क्या सीजीआई अपने बेटे के करियर को प्रभावित कर रहे हैं? इस मामले में आरोप है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने बेटे अभिनव चंद्रचूड़ के करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या भारत की न्यायपालिका में भाई भतीजावाद है? दूसरा, क्या उच्चतम न्यायालय में पारिवारिक रिश्तों का प्रभाव पड़ता है? और तीसरा, अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या ये देश की न्याय व्यवस्था को झटका देगा? अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कड़ा फैसला सुनाती है तो इससे भारतीय न्यायपालिका की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित हो सकती है। क्या भारत का लोकतंत्र इन चुनौतियों को पार कर पाएगा? मार्च 2025 के इन 10 दिनों में देश के लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है।
अगर अदालत ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। अगर ईवीएम पर कोई कड़ा फैसला आता है तो ये भारत की चुनावी सिस्टम को हिला सकता है। अगर सीईसी और न्यायपालिका के मामलों में कठोर निर्णय लिया जाता है तो ये भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता को मजबूती देगा। अब सवाल उठता है, क्या अमित शाह और मोदी सरकार इन चुनौतियों से बाहर निकल पाएंगे? दूसरा, क्या ईवीएम पर आए फैसले से भारतीय राजनीति में नई हलचल होगी? तीसरा, क्या न्यायपालिका अपने ही जजों पर निष्पक्षता से फैसला दे पाएगी? मार्च 2025 के पहले 10 दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इन फैसलों से तय होगा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र बना रहेगा या फिर सत्ता का प्रभाव न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर बना रहेगा। क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक समय का गवाह बनने के लिए? I would submit that it is no part of the policy of the act to uphold an award come what may. Or this is not the IBC, and I've made that my note, where the policy of the act is always save the company, no matter what. The policy of the Arbitration Act is very clear, Millets, and that has been discussed. We can't start importing that this is the policy or that is the policy. It has been judicially determined. Arbitration is an alternative to a very slow process of litigation that commercial parties often do not wish to have, because there is an economic cost involved even in delay. An expeditious decision, even if sometimes unfair, is possibly more acceptable to business than a correct decision, which will eventually take 50 years. Because parties cater their economic planning in a particular way. They have to plan also. If there is always a constant doubt as to whether an award will be upheld or set aside or modified, or this will happen, well, this will create economic chaos. That is their argument, that suppose if the award is set aside, yes, and it is set back entirely, yes, it will add to further delay, because the process will start from zero. well, if the power is exercised to vary it will curtail the further litigation. That is the whole point. My lord assumes that it is in the rare occasion that a court will modify the award, and rather than setting aside and sending people back to the arbitration, rather than doing that, we'll just tinker it here. That tinker it here will no longer ever remain. Just tinker it. The irony is, even where it was held that you don't have the power to modify, court is still there. But that's under 142. And the wisdom of this court minutes is given constitutionally by the framers of the Constitution under 142. That wisdom that my lords have has not been. If we go strictly by the principle of 142, yes, it is. If it's contrary to the fundamental principles of law, yes, you can't excise 142 to. Well, it's the idea of that is subject matter for another decision. No, that's settled now. The SCBA's judgment, my lord knows. We all know the Supreme Court Bar Association, Justice Anand's judgment. That's true. But if at all a power is to be exercised, it can be exercised maybe by this court, partly because there will not be further challenge. That's on a lighter note. But the fact of the matter is, if this power of modification is given, rather than settling the matter once and for all by some court saying, all right, rather than referring you back, we will do it, that modification will happen in every instance. It will be a boon for the lawyers. That without doubt is the case. Whether it's so good for the clients, we are not so sure. So the remedy will be. All that will happen is both parties will appeal under 37. Yes, Willard. So rather than one party setting aside. There will be another round. First, there will be a round, Willard, on. Anyway, there is going to be an appeal. So, okay. Willard, there will be first appeal, first on the question of as to whether you can modify or not. Secondly, there will be an appeal on whether it's curable or not. Third, once it is held to be curable or not curable, to the extent of being cured, this will blow a hole through the entire arbitration process, which has worked reasonably well for 30 years. Again, coming back to this, there have been instances of problems, I'm sure. But there have been instances of problems, as I said, with the justice delivery mechanism as exists currently with the law courts. It's not as though every judgment is correct by every court. You have appeals. Sometimes, and even a final decision is ultimately reviewed over the years later by the court. But that doesn't mean that just because there is a possibility of an error once in a while,
we do greater damage without considering the consequences. This court does not have the expertise, with the greatest respect, to examine as to what will be the effect or the consequence of allowing modification power to be read in as a policy. The reason I'm making this argument in law is that the argument was made. If I just now go to my note, otherwise I'll be as guilty of having vague arguments rather than specific on. So the first was on adding words to the statute. Can't happen because the general law does not permit. Second, that it is not as though the statute is unworkable or unfair or unjust. It may result in certain injustices, but the statute works. And third, Millets, the general principle of adding words to a statute is well referred, Millets, to a violation of fundamental rights, where a statute is vulnerable by being contrary to some fundamental right. Article 13 says you will strike down that law. So the courts have devised a principle, Millets, ut res magis valeat comperiat. Rather than striking down the statute, we will read it down, or we will insert words so as to save it from the vice of unconstitutionality. There is no such thing in a commercial statute like the Arbitration Act. No one has argued that because this is violative of a particular article of the Constitution and therefore is bad, therefore to save it from the vice of unconstitutionality, please read the words in. This principle is to be adopted, that you can start reading words in even without a threat of unconstitutionality. That will be a remarkable advancement or a change, at least, in the law. That is not the law. For fundamental rights, you can do it. What shouldn't it stretch the provisions in a practical and pragmatic way to curtail further litigation? Yes, Milind. That will come to the next point. I'm saying that Mr. Dattar's argument that please add such and such words explicitly made is explicitly incorrect for the following three reasons are given. So when the words cannot be added to the statute, then how does the power to come to modify? There are two principles that have been given, Milind. First principle that has been given is that the word setting aside itself means somehow modify. And the second is a theory of implied powers, that the greater power includes the lesser power. That's the two fundamental logical bases. So as regards the first point, as to the setting aside somehow includes the power to modify, there I only have to refer to the learned solicitors Black's Law Dictionary and Oxford English Dictionary. Setting aside means annulment. If there's any doubt in that, my lord will come to Hakim. Hakim has not been cited to some length, even though this is being reviewed. I just ask my lords to turn to Hakim and see how the learned division bench of this court examine this. My lord, that would be in volume 1 of our compilation. Page 1. Justice Dave will, of course, be aware of it because my lord was part of this bench. Solicitor's compilation also. It's also in the solicitor's compilation. But 7 volume for all these. we made our compilation with all our side so that there is no repetition duplication. My lord wishes, we can refer to the. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।